இன்று சித்திரை மாத வளர்பிறை ஏகாதேசி நன்னாள். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நன்னாள். நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்க, கஷ்டம் அனைத்தும் நீங்க, எண்ணிலடங்காத புண்ணிய பலன்கள் பெற, நம் முன்னோர்கள் பாவங்களும் நீங்க, நாம் இன்றைய தினம் கேட்க வேண்டிய, பாராயணம் செய்யப்பட வேண்டிய பாகவத புராணத்தில் உள்ள மந்திரஸ்துதியை தான் இப்போ நம்ம பாராயணமானது செய்ய போகிறோம். ஸ்ரீ சுகம் வாச்ச आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः तावता विस्मृतस्पर्यत्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिं दिशश्च रोजयन्नास्ते रौप्यायस हिरण्मयैः अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मै निर्घोषै निर्जराम्भसा सदा निमञ्जमानाग्रिः समन्तात्पय ऊर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिम् अरिन्मरकताश्मभिः सिद्धचारणगन्धर्वै विद्याधरमहोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडन्भिश्जुष्टकन्दरः यत्र सङ्गीतसन्नादैः नदद्गुगममर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशङ्कया नानारण्यपशौरात सङ्कुलद्रोण्यलङ्कृतः चित्रद्रुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः सरित्सरोभिरच्छोदै पुलिनैर्मणिवाळुकैः देवस्त्रिमज्जनामोद सौरभाव्यनलैरुतः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य मगात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम ह्याक्रीडं सुरयोषिता सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यपुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैः पणसैः आम्रैराम्रातकैरपि क्रमुकैर्नारिकेलैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैस्तालसालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बुरप्लक्षैर्वटैर्किंशुकचन्दनैः पिचुमन्दैकोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षेक्षुरम्बाजम्बूभिः बदर्यक्षाभयामलैः बिल्वै कपित्तैर्जम्बीरै वृतो बल्लातकैरपि तस्मिन् सरस्सु विपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजं कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्रश्रियोर्जितं मत्तषट्पदनिर्घुष्टं शकुन्तैकलनिस्वनैः हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राक्वै सारसैरपि जलकुक्कुटको यष्टिदात्योहकलकूजितं मत्स्यकच्छपसञ्चार चलत्पद्मरजः पयः कदम्बवेतसनलनीलवज्जुलकैर्वृतं कुन्दैकुरवकाशोकैः शिशीशैकूटजिद्गुदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथिभिः नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितं धीरजैश्चान्यैः नित्यतुर्बिरलं द्रुमैः तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूतपश्चरन् सकण्टकं कीचकवेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यद्गन्धमात्राधरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगाश्च खड्गाः महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति
सौगौरकृष्णाः सरभाश्च मर्यः वृकावरागामयि यक्षशल्या गोपुच्छसाला वृकमर्कटश्च अन्यत्र क्षुद्रा अरिणासशादयः चरन्त्यभीता यदनुग्रगेण सघर्मतप्तः करिभिः वृतो मदत्युत्कलभैरभिद्रुतः गिरिं गरिम्ना परितः प्रकम्पयन् निसेव्यमानोऽलिकुलैर्मदासनैः सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रन् विदूरान्मदविक्वल्यक्षणः वृतस्वयुथेन त्रिशाब्दितेन तत् सरोवराभ्यासमथागमद्धृतं विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बुनिर्मलं हेमारबिन्दोत्पलरेणुवासितं पपौ निकामं निजपुष्करोद्धृतं स्वात्मानमद्भिस्नपयन् गतक्लमः सपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुधिः निपाययन् संस्नपयन् यताग्रियी जिघ्रन् करेणोक्कलभाश्च दुर्मना ह्यचष्टकृत्स्रं कृपणो जमायया तं तत्र कश्चित् नृपदैव चोदितो ग्रागो बलीयाश्चरणौ रुषाग्रगीत् यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽति बलो विचक्रमे तथा दुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुशुद्धेन धियो परे गजाः पार्ष्णिग्रगस्तारयितुं न चाशकन् नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रणक्रयोः विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समासहस्रं यगमन्मयीपति सप्राणयोश्चित्रममं सतामराग ततो गजेन्द्रस्य मनौ बलौजसा कालेन दीर्घेन मगानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययोद्भुत्सकलं जलौकसः इत्थं गजेन्द्रस्य यदापसङ्कटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं तद्याविमां बुद्धिमताभ्यपद्यत नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यप्रभवन्ति मोक्षितुं ग्रागेण पाशेन विधातुरावृतो यहं च तं यामि परम्परायणं यकश्चनेशो बलिनोऽन्तको रगात् प्रचण्डवेगादपि धावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युप्रधावत्यरणम् अमीमगे। श्रीविष्णुहृदयस्तोत्रस्य संकर्षण ऋषिः अनुष्टुप् तृष्टुप् गायत्री च यथा योगं छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा देवता भगवत्प्रीत्यर्थी जपे विनियोगः। संकर्षणः उवाच ममाग्रतः सदा विष्णुगो पृष्ठतश्चापि केशवः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे वामे च मधुसूदनः उपरिष्टात्तु वैकुण्ठो वरागः पृथिवीतले अवान्तरदिशो यास्युभूतासु सर्वासु माधवः गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वप्नतोऽपि वा नरसिंहकृता गुप्तिः वासुदेवमयो ह्यहम् अव्यक्तं दैवास्य योनौ वदन्ति व्यक्तं देगं दीर्घमायुर्गतिं च
वह्निं वक्त्रं चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे दिशश्रोत्रे प्राणमागुश्च वायुं वाचं वेदा हृदयं वै नभश्च पृथ्वीपादौ तारकारो मकूपाग साङ्गोपाङ्गाख्यधिदेवता च विद्या युपस्तं दे सर्व एते समुद्राग तं देवदेवं शरणं प्रजानां यज्ञात्मकं सर्वलोकप्रतिष्ठं यज्ञं वरेण्यं वरदं वरिष्ठं ब्रह्माणमीशं पुरुषं नमस्ते आद्यं पुरुषमीशानं पुरुगूतं पुरुष्टुतं ऋतेमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महाभारतकाख्यानं कुरुक्षेत्रं सरस्वतीं केशवं गाञ्च गङ्गाञ्च कीर्तयन्नावसीदति ॐ भूः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ भुवः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ सुवः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ भूर्भुवस्सुवः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ प्रद्युम्नाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ अनिरुद्धाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ भवोद्भवाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ केशवाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ नारायणाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ माधवाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ गोविन्दाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ विष्णवे पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ मधुसूदनाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ त्रिविक्रमाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ वामनाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ श्रीधराय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ हृषीकेशाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ पद्मनाभाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ दामोदराय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ सत्याय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ ईशानाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ तत्पुरुषाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ सत्पुरुषाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः ॐ प्रणवेन्द्र विष्णो शतसहस्रनेत्री पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः यैदं विष्णुहृदयमदीयते ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति पतितः सम्भाषणात् पूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति सुवर्णस्तेयात् पूतो भवति असत्यभाषणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति वृषणीगमनात् पूतो भवति अभक्ष्यभक्षणात् पूतो भवति ब्रह्मचारी सुब्रह्मचारी भवति अनेककृतसहस्रेणेष्टं भवति गायत्र्यागाषट्टिसहस्राणि जप्तानि भवन्ति चत्वारो वेदाश्चाधीता भवन्ति सर्ववेदेषु ज्ञातो भवति सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति यदि कस्यचिन्न ब्रूयात् विच्चित्री भवति
अष्टौ ब्राह्मणगाग्रागयित्वा विष्णुलोकमाप्नोति मानसेन गतिर्भवति न नश्यति मंत्रगा यत्र यत्र चेत् तत्र तत्र उपजायते स्मरति च आत्मानं भगवान् महाविष्णुरित्याह।